This is the paper, October November 2021, variant 12. To help reduce the price of oil, new supplies are needed. However, objectors oppose exploration of new sites because the environmental damage it may cause. Why is this statement an example of basic economic problem? Abhi, why is it an example of a basic economic problem? Remember, basic economic problem kya hoti hai? That we have limited resources and unlimited wants. Basically, the basic economic problem of scarcity. So, why is this statement an example of basic economic problem? To help reduce the price of oil, new supplies are needed, and in order to increase the supply of oil, we need to explore more sites. So, oil is a limited resource. Oil is expensive. The exploration involves demand and supply, and D, there are external cost involved in the production of oil. So why oil exploration is an example of a basic economic problem? Because oil is limited resource. Say there's a limited amount of non-renewable oil that you can extract, and once it is gone, like there won't be any more supplies of oil. Look at question number 2. What is an opportunity cost for a consumer spending money on holiday? Remember, opportunity cost kya hoti hai? Opportunity cost is the next best alternative for gone. So what will be the opportunity cost? The potential interest earned if the holiday money had been saved, the price paid for the air ticket to the holiday destination, C, the rubbish created during the holiday which affects the local community, and D, the satisfaction that a consumer gains from the holiday. Remember, what will be the opportunity cost? What is the next best alternative for the consumer? Like if he is not spending the money on holiday, the consumer can possibly park that money into a saving account and earn interest. So this is the potential interest that could have been earned will be the example of opportunity cost. The price paid for an air ticket is not an example of implicit cost. It is explicit cost. C, the rubbish created, it is external cost. And D, the satisfaction is the utility that the consumer will be deriving. So B, C, and D all are incorrect. Look at question number 3. Helium is a gas that is limited in supply because it takes thousands of years to form. The US government holds 35% of the world's supply of helium and had been selling its stock and had been selling the world supply of helium, its stock. Helium is essential in medical scanners. It is also used for party balloons, which is a wasteful alternative use of a valuable good. Which two concepts apply to this statement? Demand and supply, government subsidy, B, excess demand, resource allocation, C, opportunity cost, private monopoly, and D, public sector, factors of production. तो कौन सी दो चीजें इन्वॉल्व हैं इसमें? That one is helium is a gas that is limited in supply. सही है? Because it takes thousands of years. The US government holds 35% of the world supply and has been selling its stock. Helium is essential for the medical scanners. It is also used for party balloons, which is a wasteful alternative. नहीं, excess demand नहीं होगा. One is that helium क्या है? Helium is a essential good that can be used for medical scanners. So it is an example of a factor of production. Say because if you have helium, then you can make use of medical scanners, and scanners is a capital good. So it's an example of factors of production. It can also be an example of opportunity cost, but it is not a private monopoly. Say if the US government or the US as a country holds 35% of the supply, it is not an example of private monopoly.
गवर्नमेंट सब्सिडी भी नहीं है इसमें कोई, और एक्सेस डिमांड का भी हमें नहीं पता, सही है, कि whether there is excess demand or not. Although they have mentioned कि supply limited है, so answer should be D, that there is public sector. Public sector is the US government. Say US government is an example of public sector. यहाँ पे government आपकी hold कर रही है helium. जो भी government के पास जितनी भी resources होती हैं, they are all example of public sector. जैसे government hospitals हैं, water board वगैरह है, ये सारी examples are of public sector. And the second one is that is used for medical scanners, example of factor of production. Which combination of characteristics describe a public good? पब्लिक गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? दो बहुत ही इंपॉर्टेंट, या नॉन राइवल एंड नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी आर द टू एग्जांपल्स ऑफ पब्लिक गुड. गुड जॉब. What is an advantage of market economy? Equilibrium market price clears the market. Producers and consumers have the same aim. Same aim तो नहीं होते. Consumers का aim होता है अपनी utility maximize करना, producers का aim होता है profit maximization. तो they don't have the same aim. C क्या है? The government has no need to intervene in the market, and अगर ये government doesn't have any need to intervene in the market, it's not an advantage of market economy. A lack of government intervention results in आपकी जो external cost है, ये सारी चीजें. The lowest price possible is charged. नहीं, not sure ना, because in the free market आपके पास monopolies भी होती हैं, and monopolies can exploit the consumers, and once they exploit the consumers, they can charge higher prices. Equilibrium market price clears the market. कि आपकी जो rationing होती है goods and services की, कि भाई कौन सा बंदा कितने खरीदेगा, किस प्राइस पे खरीदेगा, it is determined by market forces of demand and supply. तो जितनी डिमांड होगी उतने ही गुड्स को प्रोड्यूस किया जाएगा. गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रोडक्शन नहीं होगी, सही. So it will be based upon equilibrium, supply and demand for the good. Moving forward, what is a macroeconomic aim of the government? Government का macroeconomic aim क्या है? Balance of payment stability, deflation, income inequality, unemployment. हाँ भाई, ऑब्वियसली बात है, ना ही अनएम्प्लॉयमेंट एम होता है गवर्नमेंट का, ना इनकम इनइक्वालिटी होता है. डिफ्लेशन इज नॉट एन एम. गवर्नमेंट का एम होता है प्राइस स्टेबिलिटी हो, या बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेबिलिटी विल बी a macroeconomic aim for the government. An economy relies on potash to make fertilizers. A new deposit of potash is discovered. This diagram shows this change in the market of potash. हाँ भाई, पोटैश की मार्केट में क्या चेंज आएगा अगर सप्लाई डिस्कवर होगी? Supply curve will shift outward. Good job. The supply curve will shift outward from S1 to S2. डिमांड पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा. और इस वाले में क्या हो रहा है? इन सी द सप्लाई इज शिफ्टिंग बैकवर्ड्स, व्हिच मींस रिडक्शन इन सप्लाई ना. तो सी गलत है, because this is your old supply S1 and this is the new supply S2. But in D, S1 is this supply, it is shifting outward. So that is why D is the right answer. C is incorrect. The table shows the quantity demanded at different prices, for which fall in the price is the demand price inelastic. अब आपके पास क्वांटिटी आ रही है 6 पे, क्वांटिटी डिमांडेड इज 3, 5 पे इट इज 4, 4 पे someone has your mic on. हाँ भाई, यहाँ पे इनइलास्टिक कौन से रीजन में होगा? 3 2 anyone? What should be the answer? 3 to 2. अच्छा, answer is correct. What is the logic behind this? If you have a downward sloping demand curve ना, अगर आपके पास demand curve downward sloping हो इस तरह से, जैसे यहाँ पे बना हुआ है 6 5 4, तो always remember in the middle your PED will be equals to 1. In this region at higher prices the PED will be greater than 1. It will be elastic, and at lower prices the value of PED will be less than 1, and here it will be perfectly inelastic and here it will be perfectly elastic. सही है? So जब भी इस तरह का आए और अगर आपके पास टाइम ना हो कैलकुलेशन का, and you have a downward sloping demand curve, तो आप जो भी आखिरी वाले प्राइस
होंगे आपको उसमें पता लग जाएगा easily it is inelastic because it's a downward sloping demand curve, and at higher prices like 6 to 5 पे it will be elastic. सही है. So the answer should be 3 to 2. और अगर आप कैलकुलेट करोगे तब भी आंसर सही आएगा, लेकिन in order to, हाँ, you can calculate it through revenue as well. देखो ना, 7 multiplied by 3 price times quantity, the revenue was $21 here. And here it is 9 into 2, it is 18, which means आप प्राइस को रिड्यूस कर रहे हो, your total revenue is falling. Your total revenue curve is falling because it is inelastic. Inelastic region में अगर आप प्राइस को रिड्यूस करोगे आपका रेवेन्यू कम हो जाएगा. इसको याद रखना प्लीज in order to save time. क्वेश्चन नंबर 9 देखो भाई, which government policy will increase productivity? कौन सी गवर्नमेंट पॉलिसी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेगी? Decreasing the number of training programs, encouraging labor intensive production, promoting good industrial relations, reducing private sector investment. Promoting good industrial relations, yeah. Decrease in the number of training programs will reduce productivity. Encouraging labor intensive production, अगर आप labor intensive production को increase करोगे तब भी आपकी output increase नहीं होगा ज़्यादा. सही है, because like obviously capital is more output oriented and C is reducing the private. अगर investment भी नीचे जाएगी तो productivity कम होगी. Promoting good industrial relations, अगर industrial relations अच्छे हैं, आपकी policies ऐसी हैं, business community आपको मतलब भीतर इन्वेस्ट करना चाहती है आपकी कंट्री में, then obviously they will invest. Look at question number 10. The diagram shows the wage rates of cleaners OWC and nurses OWN. देखो भाई, एक तरफ आपके पास क्लीनर्स हैं और दूसरी तरफ आपके पास नर्सेज हैं. What is the result of a national minimum wage of OM is introduced? अब वो बोल रहे हैं कि भाई M जो है ना, ये वाली नेशनल मिनिमम वेज लगा दिया आपने. अब नेशनल मिनिमम वेज लगाई तो क्लीनर्स का क्या हुआ? उनकी सप्लाई बढ़ गई. Number of cleaners increased while the demand for cleaners went down. So there is an unemployment, सही है, in the market for cleaners. What is happening with nurses? Nurses का equilibrium ऊपर था, nurses की supply कम होनी चाहिए, while the demand would increase. सही है. Nurses के लिए क्या ये maximum है, and for cleaners it is minimum because it is above the equilibrium. वेज रेट फॉर क्लीनर्स, क्लीनर्स की वेज रेट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? हाँ भाई, क्योंकि नेशनल मिनिमम वेज है, सही है, एंड इट इज अबव द इक्विलिब्रियम, सो वेजेस फॉर क्लीनर्स विल फॉल. क्लीनर्स की तो बेटा मेरे बच्चे डिक्रीज कर जाएंगे ना, बिकॉज सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है. उनकी अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है तो उनकी वेज फॉल करेगी, सही है, बिकॉज उनके इक्विलिब्रियम से ऊपर है. फॉर nurses it will rise, क्योंकि nurses की मार्केट में क्या हो गई, there is a shortage. Say more nurses are being demanded while less are being supplied because of the wage rate. So nurses का wage rate ऊपर जाएगा, दोबारा इक्विलिब्रियम पर आएगा, और क्लीनर्स का फॉल करेगा और यहाँ पर इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा. सही है, the answer will be here. Is that clear? Okay, you look at question number 11. Which result of increased specialization in a farm is an advantage for the farm but a disadvantage for some workers in the farm? अगर आप स्पेशलाइजेशन को इंक्रीज करते हो तो क्या होगा एडवांटेज फार्म के लिए एंड डिसएडवांटेज फॉर द वर्कर? हाँ भाई, क्या होना चाहिए? ग्रेटर मशीनाइजेशन, हायर लेबर प्रोडक्टिविटी, हायर स्किल्स, लॉन्गर ट्रेनिंग टाइम. Longer training time will be beneficial for the workers obviously, क्योंकि उनकी स्किल सेट बढ़ेगा. हायर स्किल्स इज आल्सो बेटर. लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो वेजेस भी बढ़ेंगी. ग्रेटर मशीनाइजेशन, अगर मशीन्स बढ़ेंगी, सही है, मशीन्स पे रिलायबिलिटी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली फर्म्स के लिए तो फायदा है क्योंकि उनकी प्रोडक्शन इंक्रीज कर जाएगी. बट इट विल बी अ डिसएडवांटेज फॉर वर्कर्स बिकॉज दे विल फील लेस सिक्योर. उनकी जो जॉब सिक्योरिटी है वो कम हो जाएगी बिकॉज दे विल सी दैट दे आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय मशीन्स. The diagram shows the imposition of a subsidy on a product supplied by a firm. सही भाई, सब्सिडी हो गई, S1 से S2 पे चला गया इसका. Which area represents the total revenue for the farm? Remember, always remember, ये जो parallel shift होता है ना आपका, whether in the case of supply subsidy or in the case of taxation,
पैरेलल शिफ्ट टेल यू द अमाउंट ऑफ सब्सिडी या द अमाउंट ऑफ टैक्स। देखो यहाँ पर था मेरा S1, अगर मैं इसको ड्रैग डाउन कर दूं यहाँ, बिकॉज दिस इज द न्यू इक्विलिब्रियम आफ्टर सब्सिडी, तो ये जो G और E का डिफरेंस है ना, दिस इज पर यूनिट सब्सिडी, पर यूनिट सब्सिडी गिवन, सही है, द पैरेलल डिफरेंस। और उसके बाद क्या हो रहा है, जब आपने सब्सिडी दे दी, क्वांटिटी कितनी हो गई, OM। सो इफ आई मल्टीप्लाई दिस एरिया, इफ आई मल्टीप्लाई दिस GE विद EK, तो ये मेरा जो है ना दिस, बिकॉज अगर मैंने पर यूनिट एज अ गवर्नमेंट, इफ आई एम गिविंग अ सब्सिडी ऑफ $5, $5 की सब्सिडी दे रहा हूँ मैं, एंड नाउ द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी सोल्ड इज 100, सो द $5 multiplied by 100 will be the total government spending on the subsidy, which is $500। तो क्या हो जाएगा भाई, EGH OEKM OEKM OFGHM। अच्छा, ये तो टोटल, मैंने ये तो टोटल सब्सिडी बताई है। आपको निकालना है टोटल रेवेन्यू। सही, टोटल रेवेन्यू क्या होता है, प्राइस टाइम्स द क्वांटिटी। सो OG will be the total price, and this area will also be included in the total revenue or total income for the producers। so ये हो जाएगा OGHM। सही, ये वाला जो एरिया है आपका पूरा, this one will be the total revenue that the producers will be making। is that clear? और पर यूनिट सब्सिडी वाला एरिया होता है GEH के, जो मतलब गवर्नमेंट की स्पेंडिंग होती। कैन वी मूव अहेड? अच्छा जी, look at question number 13। The diagram shows the total cost curve for the firm। What can we, what is the area representing subsidy? बेटा ये वाला red one, GEHK। This rectangle, the red one, is your subsidy expenditure, and the total one is the earning for the producers। The diagram shows the total cost curve of a firm। Total cost का ये curve है भाई आपके पास। What can be concluded about the firm? It has no fixed cost, it has no variable cost, the average fixed cost increases, the average variable cost is constant। नहीं ना, वेरिएबल कॉस्ट तो होगी, क्यों नहीं होगी। देखो दिस एरिया, यहाँ जहां से आपका टोटल कॉस्ट का कर्व शुरू होता है, दिस अमाउंट इज योर फिक्स कॉस्ट, ये होती है आपकी फिक्स कॉस्ट, एंड you will have variable cost starting from the origin and parallel। तो ये होती है आपकी फिक्स कॉस्ट। देखो द वेरिएबल कॉस्ट इज लीनियर। सही है, लीनियर का क्या मतलब है, लीनियर का मतलब है कि पर यूनिट जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट होगी ना वो सेम होगी। सही है, और पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट सेम है, which means the average variable cost is constant। आपकी जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होगी वो कांस्टेंट रहेगी, जो भी आपका रॉ मटेरियल और आपका लेबर की कॉस्ट है वो सेम है, वो चेंज नहीं हो रही। सही है, द वेरिएबल कॉस्ट इज सेम। देखो लेट से मैं आपको बताता हूँ, फिक्स कॉस्ट है मेरे पास $100,
सही है। मैंने बोला वेरिएबल कॉस्ट जो है ना पर यूनिट इज $2। सही है, मतलब मैं अगर एक यूनिट को प्रोड्यूस करूंगा तो उसमें मेरे $2 का रॉ मटेरियल और लेबर वगैरह लगेगा। नाउ व्हाट विल बी द कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ 100 यूनिट्स। अगर मैंने 100 यूनिट बनाया तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, फिक्स कॉस्ट 100 प्लस $2 इंटू 100। सही है, कितना हो गया भाई टोटल 300। ये मेरी टोटल कॉस्ट है। नाउ इफ आई कैलकुलेट द टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई 200। सही है, और अगर मैं 200 को अपने आउटपुट से डिवाइड कर दूं 100 यूनिट से, तो मेरे पास आ जाएगी टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन आउटपुट विल गिव मी द average variable cost. Now the average variable cost will be how much? Again $2. Average variable cost is constant. अब अगर इसी तरह से मैं 200 यूनिट के लिए भी करूं, the total cost for 200 units, fixed cost will remain same 100 plus 200 into 2 which is again कितना हो गया भाई 500। अब इसमें भी टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 400। अब अगर मैं इसको आउटपुट से डिवाइड कर दूं which is 200, how much is my average variable cost? $2। द एवरेज विल स्टे कांस्टेंट, क्योंकि आपके पास जो ग्राफ है टोटल का वो लीनियर है। सही है, वो आपका कर्व नहीं बन रहा, या वो इस तरह का नहीं है, यूं कुछ नहीं बन रहा। सही है, सो सिंस द एवरेज द टोटल कॉस्ट इज लीनियर, इसका मतलब है कि वो एक फिक्स प्रोपोर्शन में इंक्रीज हो रही है आपकी टोटल कॉस्ट। सही है, जिस हिसाब से आपकी टोटल कॉस्ट इंक्रीज होगी उसी हिसाब से आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होगी, और क्योंकि वो लीनियर है तो वो चेंज जो है वो सेम रहेगा। इज दैट क्लियर? The table shows the average total cost of a firm over a range of output. एवरेज आ रही है अभी, एवरेज टोटल कॉस्ट है। एवरेज टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल ऑन आउटपुट। व्हाट हैपन आफ्टर 4 यूनिट्स आर प्रोड्यूस। वो बोलेंगे भाई जब 4 यूनिट्स प्रोड्यूस होगा उसके बाद क्या हो रहा है। देखो एक आउटपुट पे कॉस्ट इज 10, दो पे 8, 6, 5, 7 और 9। पहले क्या हो रहा है, आपकी एवरेज जो टोटल कॉस्ट है वो डिक्रीज कर रही है 4 तक, फिर उसके बाद इंक्रीज कर रही है। अगर मैं एवरेज टोटल कॉस्ट का ग्राफ बनाऊं, इट विल बी समथिंग लाइक या, तो क्या होगा भाई, 4 यूनिट के बाद द फर्म विल स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल की एग्जांपल क्या है, मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स, देयर विल बी मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स। सही, कम्युनिकेशन बैरियर्स आ गए, डिसीजन मेकिंग में टाइम लग रहा है, उसकी वजह से आपकी एवरेज टोटल कॉस्ट विल इंक्रीज। इज दैट क्लियर? Two car manufacturers agree to merge. Which outcome would be disadvantage for customers? Customers के लिए क्या disadvantage होगा अगर दो कार मैन्युफैक्चरर्स मर्ज कर रहे हैं? Increase capital for research and development, lower average cost through economies of scale, reduce range of vehicles produced, use of wider range of marketing information. हाँ भाई, it will be C. Reduce range of vehicles produced. Now they will reduce their output, क्योंकि उनको पता है कि यार हम merge कर चुके हैं, we can act like a monopoly, we can reduce our output in order to exploit the customers and charge higher prices. An economy recorded a second month of deflation. दूसरे consecutively month में उनके पास deflation हो रहा है. What does this mean? It was facing a recession. The price levels were falling, demand was rising, unemployment was falling. हाँ, तो डिफ्लेशन का क्या मतलब होता है कि प्राइस लेवल जो है, देयर इज अ persistent fall in the price levels, जब आपके यहाँ चीजें सस्ती होना शुरू हो जाए। व्हाट इज द कॉज ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन? डिमांड पुल इन्फ्लेशन कब होता है भाई, जब आपकी एग्रीगेट डिमांड AD नॉट टू AD1 शिफ्ट कर जाए, the price level will shift from P naught to P1. A surplus of skilled labor,
higher government spending, higher taxes, lower net exports. Yeah, higher government spending. Aggregate demand क्या होती है? AD is equals to C plus I plus G plus X minus M. So ये G है. This represents government spending. If the government spending is increasing, aggregate demand will shift outwards, causing demand pull inflation. What is the consequence of economic activity for individuals and for economy? Consequence क्या होगा किसी भी economic growth का individuals के लिए और economy के लिए भी? Economic growth फायदेमंद कैसे होगी individuals के लिए? Basically, increase in absolute poverty, no. Absolute poverty तो कम होनी चाहिए जब आपके यहाँ aggregate income बढ़ रही है, लोगों के पास average income increase हो रही है. Increase in average income ये हो सकता है. Increase in the variety of goods and services produced, this can also happen. Increase in unemployment, no. Economic growth reduces unemployment. अब economy के लिए क्या होगा? Increases inflation, yes, inflation increase करता है, but it can be a consequence for economy अगर आपके economic growth हो रही है. But हमारा जो individuals वाला था वो गलत है, तो ये option गलत हो जाएगा. Option A is incorrect. Increase in the government tax, this can happen कि अगर लोगों के पास ज़्यादा employment generate हो रही है. रियल इनकम का मतलब होता है इनकम एडजस्टेड टू इन्फ्लेशन. मतलब अगर आपकी इनकम जो है वो इन्फ्लेशन से के साथ किस हिसाब से बढ़ रही है. फॉर एग्जांपल इनकम इज इंक्रीजिंग बाय 10% एंड इन्फ्लेशन इज इंक्रीजिंग बाय 5, इसका मतलब है कि रियल इनकम इज इंक्रीजिंग बाय 5%. सही है. सो ये हो सकता है कि भाई अगर आपके इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, देयर विल बी इंक्रीज इन गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू बिकॉज मोर एम्प्लॉयमेंट विल जनरेट मोर टैक्स. Reduction in exports, no, this won't happen, and D भी हमारा गलत ही था. Say, so the correct answer will be B. The table shows a government's receipts from taxation. Say भाई air passenger duty है, tax on profits, import duty, income tax, inheritance tax, sales tax. What is the total amount of revenue raised by indirect taxes? Indirect taxes कौन से taxes होते हैं? Taxes that are included in the prices or taxes that are included in the expenditure. Those taxes that are not directly deducted from your income. सही है. तो भाई air passenger duty will be indirect. Tax on firm's profit, direct. Import duty, indirect. Income tax, direct. Inheritance tax, direct. Sales tax, indirect. So now what will be the amount of indirect taxes? Indirect taxes की amount क्या हो जाएगी? 300 plus 75 plus 10. So this is 385 million. The answer should be C. Look at question number 20. Which supply side policy measure would help to match the skills of workers to job vacancies? हाँ भाई, कौन सा supply side policy का measure होना चाहिए कि जो relevant लोग हैं उनको आप connect कर सको job opportunities से. जैसे LinkedIn है या और जो job portals होते हैं. 18 में बेटा ये देखो आपके 18 वाला एक मिनट में आ रहा हूँ 18 पे. Which supply side policy measure would help to match the skills of workers to job vacancies? हाँ भाई, job vacancies के साथ आप किस तरह से मैच करो. Encouraging a modernization of factories, offering retraining of unemployed workers, reducing taxes, and replacing government enterprise with private enterprise. The only policy that will match is retraining of unemployed workers. ताकि अगर आपके यहाँ unemployed workers retrain हो जाएंगे, एक तो ये supply side policy measure है, and दूसरा ये कि जो available job vacancies होंगी after training, they can switch to them. 18 पे देखो क्या हो रहा है. व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस? बोल रहे इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब आपका जीडीपी बढ़े, आपके प्रोडक्शन हो ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज की. तो देखो जब प्रोडक्शन होगी ना गुड्स एंड सर्विसेज की, तो इसका मतलब है एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, और जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी लोगों के पास पैसा ज्यादा आएगा, इनकम बढ़ेगी. सही है. तो देयर विल बी इंक्रीज इन द एवरेज इनकम. आवाम के लिए, इंडिविजुअल बंदे के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ का फायदा ही होता है कि आपकी एवरेज इनकम बढ़ जाती है. और गवर्नमेंट के लिए क्या होता है? गवर्नमेंट के लिए एडवांटेज इज दैट कि जब एवरेज इनकम बढ़ती है ना, तो गवर्नमेंट के पास टैक्स भी ज्यादा आता है. सही. गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू विल आल्सो स्टार्ट इंक्रीजिंग. हाउ इज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन मेजर्ड? इन्फ्लेशन का रेट किस तरह मेजर होता है? बाय कैलकुलेटिंग द चेंज इन द प्राइसेस फ्रॉम वन ईयर टू नेक्स्ट ईयर. सही. जो आपका नए प्राइसेस है करंट ईयर के, आप उनमें से माइनस कर देते हो ओल्ड ईयर के प्राइसेस,
बाय कैलकुलेटिंग रियल वैल्यू ऑफ आउटपुट से नहीं होता, टोटल नंबर ऑफ पीपल से भी नहीं होता, और एक्सपोर्ट से भी नहीं होता। सही है, तो प्राइस चेंज से आप कैलकुलेट करते हो इन्फ्लेशन को। So we get due to issue. अच्छा, which combination of policy measures is most likely to increase employment? Employment कब बढ़ेगी आपकी इकोनॉमी में? Decrease in general taxes, decrease in the interest rate. Yes, ये हो सकता है। इंटरेस्ट रेट को नीचे ले जाओ, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, फर्म्स इंडस्ट्रीज लगेंगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। टैक्सेशन को कम कर दो, डिस्पोजेबल इनकम लोगों की बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगी, एग्रीगेट रियल जीडीपी बढ़ेगा, तो आपके यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट विल फॉल। सही है, इंक्रीज इंटरेस्ट रेट से इन्वेस्टमेंट डिस्करेज होगी, जनरल टैक्सेशन से कंजम्पशन डिस्करेज होगी, और ये तो दोनों के। तो ये बेसिकली क्या है आपकी, रिडक्शन इन टैक्सेशन एंड रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट आर योर expansionary monetary and expansionary fiscal policies. Poverty in households may be defined in relative terms. Relative terms का क्या मतलब है? What indicates relative poverty? Relative poverty है क्या basically? Definition होती है कि relative poverty की, notes में भी मैंने दी हुई है। Income level required to meet the basic need, lack of access to clean water, living on less than $2 कंपैरिजन में, या बेसिकली। सो इसका क्या मतलब है, फॉलिंग बिलो द सोसाइटीज एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड। जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड ये है कि एवरीवन शुड हैव अ स्मार्टफोन, इफ समवन डजंट दे आर रिलेटिवली पुअर। और एब्सोल्यूट का क्या मतलब होता है, वेयर यू डोंट हैव बेसिक नेसेसिटीज। हाँ हाँ, लेकिन बेसिक नेसेसिटीज होंगी इफ समवन इज रिलेटिवली पुअर। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन एन इकोनॉमी ऑफ नेट इमिग्रेशन ऑफ पीपल एज 20 to 40? नेट इमिग्रेशन का मतलब है लोग जा रहे हैं आपकी कंट्री से, 20 से 40 साल वाले छोड़ के जा रहे हैं मुल्क, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। A more mobile labor force and aging population, higher government tax rising. Yeah, there will be more aging population. अगर आपकी middle age लोग जा रहे हैं, इसका मतलब है बुढ़े बुढ़े लोग रह जाएंगे, तो there will be a more aging population in your economy. The table shows for statistics for 4 countries A to D. Which country has lowest living standard? Lowest living standard के लिए क्या होना चाहिए? Average annual growth rate of population ये high हो, population growth rate high हो, population density मतलब 1 किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं ये भी हाई हो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी लो हो, तब आपके यहाँ लिविंग स्टैंडर्ड्स कम होते हैं, रियल जीडीपी भी लो। तो कौन सी कंट्री ऐसी है जिनके ये शुरू के 2 स्टैंडर्ड्स हाई हैं और बाकी 2 लो? देखो, एवरेज एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ इन दोनों का हायर है, पॉपुलेशन डेंसिटी भी इन दोनों की हाई है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है सबसे लो इसकी है या इसकी है, और रियल जीडीपी पर हेड जो है वो इसका और इसका लो। तो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स कहां पर मिल रही हैं आपको? इकोनॉमी डी में, which means that they have the lowest living standard. A country specializes in the production of steel, toys and textile. What is the disadvantage of specialization of a country's workforce? अगर आप एक ही अगर आप स्पेशलाइज कर लेते हो तो what will be the disadvantage? They cannot afford to buy products. Yes, they can afford, trade होगा, आपको पैसे आएंगे, आप इंपोर्ट करोगे। They could become structurally unemployed if the global demand, ये हो सकता है। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल आपके यहाँ ग्लोबल डिमांड चेंज हो जाए, सही है, और आपके प्रोडक्ट्स आर नॉट लॉन्गर नीडेड इन द डिमांड, देयर विल बी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, फिर आपके यहाँ स्ट्रक्चरल आपके यहाँ वो इंडस्ट्रीज काम करना बंद कर देंगी। द डायग्राम शोज चाइना's ट्रेड विद ब्राजील फॉर 2 years. सही भाई, ये एक्सपोर्ट्स हैं ईयर 1 के और ये एक्सपोर्ट्स हैं ईयर 2 के। दीज आर इंपोर्ट्स, ओ सॉरी मैं थोड़ा सा गलत लेबल कर दिया। These are for exports in year 1 and this is exports in year 2. This is import in year 1, this is import in year 2. Import भी बढ़ रहे हैं, export भी बढ़ रहे हैं। What happened to China's trade balance with Brazil between year 1 and year 2? क्या हो रहा है? It experienced falling surplus, it experienced rising it experienced, हाँ भाई देखो पहले क्या था, पहले एक्सपोर्ट आप कर रहे थे, चाइना एक्सपोर्ट कर रहा था अराउंड 1 बिलियन और इंपोर्ट भी कर रहा था माइनस लेट्स 0.8 बिलियन, सरप्लस था 0.2 का। अब क्या हो रहा है, अब आप देखो एक्सपोर्ट कर रहे हो उनको कोई $2.1 बिलियन के, एंड नाउ इंपोर्टिंग लाइक अराउंड
4.4। मतलब आपका जो डेफिसिट है वो बढ़ रहा है, चाइना का जो डेफिसिट है वो इंक्रीज कर रहा है, बिकॉज नाउ दे आर इम्पोर्टिंग, उनका इम्पोर्ट ग्रोथ ज्यादा हो रही है। Look at question number 29. The US imposed tariff on cars and motorcycles from Germany. Tariff लगा दिया, टैक्स लगा दिया. What is the effect of this tariff? Decrease in inflation in the US, decrease in the trade between US and Germany, increase in the profits for cars and motorcycles. नहीं, जर्मनी के जो प्रोड्यूसर हैं उनका प्रॉफिट कम हो जाएगा क्योंकि जाहिर है टैक्स लग गया आपके गुड्स पे. Increase in the living standards of US, in US and Germany living standard भी कम हो जाएगा टैक्सेशन की वजह से. Decrease in the trade, ट्रेड की वॉल्यूम कम हो जाएगी. जाहिर है जब आप टैक्स लगा दोगे तो आपके कंज्यूमर्स नहीं खरीदेंगे, और जब नहीं खरीदेंगे इट विल फॉल. व्हाट इज एन इमीडिएट इफेक्ट ऑफ अ कंट्री ऑफ फॉल इन इट्स फॉरेन एक्सचेंज रेट? आपका एक्सचेंज रेट गिर गया, सही है, मतलब डॉलर महंगा हो गया, पाकिस्तान की करेंसी गिर गई. A fall in money supply and increase in the purchasing power, cheaper imports, more competitive. या आपके एक्सपोर्ट जो है वो ज्यादा कंपैरेटिव हो जाएंगे, ज्यादा सस्ते हो जाएंगे इंटरनेशनल